बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट ने वो तमाम चीजें जो उनके इख्तियार में ना थी वो उन्होंने कर दी। सो दैट इज द आर्गुमेंट। फर्दर मेरा ख्याल है मैं तहरीरी तौर पे भी सबमिट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया बहुत बहुत चौधरी साहब। अब कौन से हसन इरफान आएंगे, दूसरे साहब आएंगे, कौन आ जाइए। आप करना चाह रहे थे, आप नंबर बता दीजिए जी। 9019 मालूम 19 है। It's Mudassir Hassan Jura. I have also submitted the submissions. It is CMA 8300, and there is another booklet that I was able to prepare today that I would be submitting during the course of the arguments. 19 निकलवा दी जी। Malad, I would, Your Lordship, the case law is very well known. I would not go into the case law details. I have mentioned arguments, but I would touch upon the broad-based thing, and I'm grateful to Your Lordship in saying that we have to go by the letter of the Constitution. The Constitution is very clear. I am confident that I may be able to convince Your Lordships that by reading the Constitution itself, we may be able to find an answer whether this is a valid law or it is not a valid law. So in essence, Your Lordship, the question that was asked is about legislative competence. Now, legislative competence has two parts, and in fact, in the we haven't asked you any question. Malad? We haven't asked to the previous counsel. Go leave it for them. You argue your case as you want to. This is a legal question that I would say. It has a process, whether there is a legislative competence, and even if they have the legislative competence, whether the content of the legislation are within the framework of the Constitution. And then the third question, of course, in the light of the provisions of Article 191 would apply, because 191, and I would like to read those provisions also, does not places a further requirement that even if a law is passed, Your Lordships have to implement that law, because it says, subject to Constitution and law, the Supreme Court may make the rules. So that is something I believe is, which is something which is missing in the Constitution. However, Your Lordship, first of all, the maintainability questions, very briefly, there are 3 points which are relevant for maintainability. The first is that it touches upon the judicial functioning of the Honorable Supreme Court. Now, judiciary is one of the 3 pillars of the Constitution or the state, and therefore, if we go by mathematics, it covers around 33%, if not more. So that is a very substantial question. Please make some legal arguments. Malad, that is... No, please, आगे बढ़िए ना. 33%, what sort of argument is Malad, this? because it touches upon one of the pillars of the Constitution. आगे बढ़िए, and please. if it's a fact that then आगे बढ़िए. Malad, the second point is, of course, if Your Lordship may see Article 50, if I may... 50, Malad. And these points, Malad, I'm trying to show to Your Lordship that there is a very serious questions which are to be considered. 50 defines the Majlis Shura. Can you what point you are making before we start reading something at random? This is on the maintainability of the petition. There shall be a Majlis Shura, Parliament of Pakistan consisting of President and 2 houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. Now, Malad, the submission is that this bill was sent to the President for assenting. The President, as a part of the Parliament, raised an objection to this thing, and there was a press release. The President... Please argue your petition. Malad, that is... Which ground is this? Malad, that is... Where have you stated this in your petition? Malad, on the legislative competence... Where have you stated all these things? Malad, this is an elaboration of my arguments that... No. You cannot argue something factual which we don't know about.
Well, this is, I have a paper book that Your Lordship would be submitting now because there was a press release and this is. Press release pe. My Lord, I would, if Your Lordship is not convinced on that, I would. It's not a question of convince. I don't think it's any sort of argument. My Lord, the reason why I'm submitting this is that even within the Parliament itself, there is a dispute whether this law could be passed by the Parliament because the presidential. Suppose we agree or disagree, what difference will it make? Well, because it would give Your Lordship the thing that this is a very serious matter which has to be considered by Your Lordship because the Parliament itself is debating and discussing whether they have the legislative power or not. And President is the head of the Federation. So when the President is saying and part of. He told you. He told you. My Lord, it is the record, my Lord. No, which record? My Lord, before us? The press release issued by, my Lord, this is. Before us, which page is it? My Lord, both. If he's told you something privately, well, that's good for you. My Lord, this is the paper book that I have prepared. अब आप बताएं ना रिकॉर्ड पे रखिए बताएं ना ये आप नहीं हम कुछ नहीं लेंगे आपसे ऐसे उठा करके कागज आप दे रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है फाइलिंग करने का मतलब ये अभी नहीं हम नहीं लेंगे सॉरी ये बिल्कुल जो मर्जी आप अगर कोई लीगल आर्गुमेंट दे रहे हैं कोई बुक से कॉपी दे रहे हैं जैसे चौधरी साहब से सीखिए उन्होंने बुक्स का हवाला दिया जो उन्होंने मुंजमद कर दी मैंने 3-8 इरफान साहब प्लीज आर्ग्यू द केस मतलब I would go to 184 जी And my Lord, the relevant grounds I have mentioned, they are starting on 184, is starting from page 8 of the paper book, the submissions that I have made. Your Lordship, if with your permission, I would start the wordings of 1843, my Lord. My Lord, the relevant part is, without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights referred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. But the legal submission is that this provision of 1843 is not beginning with subject to Constitution or subject to the law. This is an open-ended, wide provision which, even when we compare it with Article 199 is subject to the Constitution and it permits only an aggrieved person to bring out a petition. Whereas 1843 does not places any restriction that a person who comes to this honorable court be an aggrieved person. And Lordship, the second important point on reading 1843 is that it talks about the Supreme Court shall. This is a statutory requirement that it is the Supreme Court by itself. Whereas the legislation that we have challenged has provided for a committee to decide whether they are. So, in essence, what the law is doing, the law is replacing as a first step the Honorable Supreme Court's function and transferring it to a committee which may not even be. And the third condition of 1843 or the power. Are you, just clarify this, are you contending that individually Chief Justice of the Supreme Court cannot invoke this power and this power vests exclusively in the Supreme Court, which means the Chief Justice and all the judges of the Supreme Court? Clarify this. Lord, what are you saying? My Lord, that to that, my Lord, 191 gave the power of. जवाब दे रहे अब दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं. My Lord, no, my Lord, I'm coming to that question because that is relevant. In the context, it's relevant. My Lord, the power was to the Supreme Court. The Honorable Supreme Court sat down, they made the rules. And all the judges, the Supreme Court, then delegated their own power as a whole to the
Chief Justice through the rules. So that कहाँ लिखी है ये बात? my lord, that is in the rules, my lord. Whether the Supreme Court can grant the power assigned to the Supreme Court in the Constitution to someone in the Supreme Court, say to the Chief Justice or to the senior pleni or to anyone. Can this be done? That is delegation of power का that is the delegation of power. That कौन is सा rule है? Article 191 empowers the Supreme Court to make rules, my lord. and those rules are administrative in nature, Absolutely. and the formation of benches is an administrative power. So is the fixation of cases. My lord, Now, what this law does is, notionally, it removes that power from the Chief Justice and assigns it to two more judges, a committee of 3 judges. yes, my lord. अब इसमें अगर वो डेलीगेशन का एलिमेंट है तो यस इन एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स द कोर्ट कैन डेलीगेट सम ऑफ द पावर्स टू वन ऑफ द जजेस, be it the Chief Justice, be it a committee, be it 4 judges, be it 6 judges. That power has been exercised under Article 191, which is a constitutional mandate. Absolutely. So where a constitutional mandate empowers the Supreme Court to make rules, those have a certain sanctity attached to them. My lord, we have to also see what is the Constitution mandate as a whole. The Constitution itself recognizes this principle of delegation of powers. Even the Parliament has the parliamentary parties. The function, certain functions like the law-making function is delegated to the select committees or the thing. So that also works in the company law also. That is, I think, one of the fundamental principles of law as a whole, that the powers can be delegated to another person or within that body. So that is what my submission is. This is not a delegation of power. Yes, This is not a delegation of power. ये तो Chief Justice along with 2 members of the bench or the Supreme Court will make the Your Lordship, cause list or the benches. that if- Chief Justice has himself not delegated any power to the other 2 judges. Then the- So this is not the case of delegation. then the question would arise that the Supreme Court delegated the power to the Honorable Chief Justice. Now, whether this Honorable Supreme Court itself as a whole can draw or replace those powers, or the Parliament can do that. Is The it your Parliament cannot do argument- that. Is it your argument that Article 191 does not delegate this power to the Parliament? To the Parliament, absolutely. In order to shield the working of the Supreme Court, Article 191 specifically says the Supreme Court would make its rules. And my lord, Now, what if one were to flip the argument, what prevents the Parliament from making a law to say, okay, matters relating to 184(3), formation of benches, sitting of benches, the number of judges who would sit on each bench would now onwards be determined by the Parliament. right? Would be determined by the Parliament. My lord. I mean, अगर मतलब उनके पास अगर legislative competence है, तो वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते? Look, My that- question to you is that. My lord, my answer very quick. If I may add to that, just add to that, what if Parliament makes a law saying that all of these things which my learned colleague has specified, the power to that is delegated to the federal government? Yes. My lord, There is no end to it. Then their separation of powers becomes a completely illusory concept. Whereas there are innumerable judgments saying it is one of the most fundamental principles. The executive branch has been kept out. The Attorney General argued on the last date that in respect of rule-making power, previous constitutional dispensations had said rule-making power will be with the previous sanction of President, meaning executive branch. And learned Attorney General told us that in this law, the executive branch has been kept out of the rule-making power. But what is if
If this power vests in Parliament, Parliament is the federal government banayegi rules. Lord, if I may, I mean, there is then no end to it. there is no end to it, but if I may jump my arguments, I made them, so legislation has actually... It would be easier if you just framed your point on what you're supporting, what your argument is, and then just gave us the points on it, So- rather than mixing it up. So if you're doing maintainability, then just rate your points on that, please. Your Lordship, because this point actually goes to maintainability also, because what they have done is they have amended the constitution in the garb of a legislation. So it also goes, so it's dual purpose. So because they have not followed the constitutional provision of amending the constitution if they wanted to do so, therefore on that basis it is maintainable. And then on, as I said in earlier beginning of my argument, on the contents also. So in essence, before I go to the main content, 1843, if true purport of 1843 may kindly be seen, because there were some questions that what fundamental right has been violated and what has been done, whereas 1843 is silent on that. It does not requires that any fundamental right has to be violated, then a petitioner can come to this honorable court. If I may be allowed to read, and I'll say what actually it entails. So, without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers, so that is first consideration, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights is involved. So, only if there is a question of fundamental rights is involved. And here it is a question of fundamental right which has been involved and a question of public importance. So only if a question arises, whether or not any right has been violated or not, or breached or not, in my humble submission. Precisely which fundamental right is the petitioner seeking to enforce? That's a question. If a question relating to fund. So one of the rights is access to justice, for example. No, it is with reference to the fundamental right, है ना? आप जो read कर रहे हैं वो public importance कर रहे हैं. With reference to the fundamental right. Your Lordship, in fact, if I may, conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved. If I may put it this way. You cannot read in bits and pieces. No. If I may put it this way, the rule of access to justice is actually a thread that run across all the fundamental rights. What if the law provides access to justice? The law access to justice is Article 4 and 8, and in fact there are judgments of this Honorable Court, as Your Lordship, Mr. Chief Justice was saying in the first hearing. In fact, there are multiple judgments of this Honorable Court, but the only judgments which perhaps are binding of this Honorable Court are those of 15 or benches. So of course it is open for Your Lordship to revisit those cases. If Your Lordship, Counsel, how is the petitioner's access to justice impaired by this law? Lordship, the reason that if I talk about lawyers, the petitioner is also a lawyer. Petitioner is also a lawyer. Maybe a lawyer, access to justice, how is that being affected? Because I have a petition and that I want to bring under Article 184, I am prevented by this committee because it will first go to the committee. They may or may not decide that this petition should be put before the Honorable Supreme Court. What I am submitting is, if I may be allowed to complete my argument, my Lordship. If the Chief Justice has exclusive rights, then access to justice is not affected. The Chief Justice is not, there is no provision prior to this law that the Honorable Chief Justice will examine the petition. It is his prerogative whether he fixes it for hearing or not, but he will not decide whether this petition should go for hearing or not. Whereas this committee is going to decide, and it is not clear from this law whether there will be a right of hearing or not. I just want a clarification. In interpretation of Section 3 of the Act, that it's a determination by the three-member committee which matter can be heard or not, or is it merely determining who will hear the matter?
Not if. पढ़ लेना उसकी language देखना और if it will be heard. जी मेरी ये petition का ये petition छोड़िए कानून पढ़िए ना. जी मैं कानूनी पढ़ रहा हूँ page 9 पे. ये जरा वजाहत कर दें इस दोनों बातों में. Page 9 पे है. Mr. Hassan. जी सर. I think you are going ahead of the argument. You are going into the nitty-gritty of section 3 and 4 and 5 and 7. The first question that needs to be answered is, जो आप argument कर रहे हैं कि जी access to justice और कौन सा fundamental right affect होता है. Now access to justice is itself a fundamental right. Absolutely. Or what is access to justice? Access to justice is to be able to approach a Supreme Court or a court which is independent. So where any law or any provision of any law, according to you, affects the independence of judiciary, then it directly affects your fundamental right to access to justice, because part of the access to justice is access to an independent court. Number one. आप हमें ये आर्गुमेंट बताइए कि ये जो एक्सेस टू जस्टिस का फंडामेंटल राइट है, नंबर वन, ये किस तरह अफेक्ट होता है. नंबर टू, अगर ये फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो दैट बाय इटसेल्फ बाय डेफिनेशन is a question of public importance. Number two. Number three, the argument whether it is competent, maintainable, not maintainable, I think we have gone beyond that. The very fact that one side is saying it does not affect independence of judiciary, the other side is saying it does affect the independence of judiciary, and this court is called upon to examine whether it does or it does not. So the very fact that we are examining that question itself shows that it is a question that needs to be examined and is therefore a maintainable issue or a petition. In fact, related to that also the question, we are not debating whether the law is good or bad. Mr. Hassan, if I may request my distinguished colleague that let Mr. Hassan at least address what one of us have asked, because otherwise we won't. My question actually is totally related to what has been asked. In the context of access to justice, I had previously asked that when a full court sits, the right of appeal is not available to the petitioner. If the objective of the law was to give access to justice, and the response of the Federation is that, well, when the committee decides that a full court should sit, then there's no right of appeal. Does that bar the right of access to justice? Is this a substantive right that is being prevented? Or can we just say that the power that was vested in the Chief Justice, to that extent it was incorrect? Now that the committee will decide that a bench of 10, 11 or 12 will sit, and so the right of appeal is blocked. Does that affect the right of access to justice? That, your leadership, is a very pertinent question. That, in my humble opinion, it does. But I have an answer to that, howsoever irrational that argument may appear. But maybe the framers of the Constitution did not have in mind that that is a solution. But there is a solution in the Constitution which could perhaps, in a very let's say, extraordinary situation may be resorted to by the Honorable Chief Justice if a full court hears. And that's contained in Article 186. Let me just find it out. Where there is a power, if there are reasons, substantial reasons, the Honorable Chief Justice can actually increase the strength of the Honorable Supreme Court. That's a different situation. Yes, in fact, by not giving the right of appeal, it basically means either the Supreme Court can never sit as a full bench and can never sit as a 10 or 11, 12-member bench. That is one way of looking at it, because that ability of the court to constitute its bench, a larger bench where required, is now blocked if the right of appeal has to be given meaning.
The right of appeal under Article 185 of this Constitution is itself given what could be a right of appeal, and in fact that is one of my arguments when I'll come to that provision, that Article 185(3) does not actually empowers the Honorable Supreme Court in all other matters which are not mentioned there to have a direct right of appeal. It is only by way of special leave to appeal. So there is a distinction that perhaps the drafters of this legislation may not have appreciated. But let me come to your Lordship's question. In fact, there is another question which leads to what your Lordship is saying, is that what we are saying is, howsoever good the law may be, it has to follow a certain provision. Whatsoever, we don't doubt the intentions of the Parliament. Parliament is of course supreme. Supreme Court is, I believe, the supreme thing over the Supreme Court and the Parliament is the Constitution. The Honorable Supreme Court is bound by the Constitution, the Parliament is bound by the Constitution. And one of the points that I have mentioned later on is that the oath of offices, all the oaths, whether it's of the Chief Justice, President, Prime Minister, Parliamentarian, they have three common words: preserve, protect and defend. The Constitution. Oaths mein. So there is a duty of everyone who takes an oath. Schedule 3, oath of office, President. President का नहीं, तो judges का पढ़िए. Judges का पढ़ देते हैं मारो. जी, ये आप जो आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हैं जरा बताएं, तो इसकी बुनियाद तो रखिए पहले. हेलो, बुनियाद पढ़िए ना, हजूर क्या पढ़ना चाहते हैं उसमें से? Chief Justice of Pakistan of the High Court or Judge of the Supreme Court of the High Court, Articles 178, 194. I, so and so, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Pakistan or a Judge of the Supreme Court of Pakistan or Chief Justice or a Judge of the High Court for the province or provinces of, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. So the Constitution. ये जो लफ्ज हैं, तीन लफ्ज and the law, ये सब मद्देनजर रखिए और आगे बताइए पॉइंट आपका. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. बताइए क्या point आप? Malad, the point is this, that the Constitution has demarked the powers of the Parliament. नहीं, आप आइन के ओथ की बात कर रहे थे, अब आपने उसको अधूरा छोड़ दिया आर्ग्यूमेंट को. नहीं मतलब अधूरा छोड़ा, मैं आ रहा हूँ उस बहस को पूरी मुकम्मल तो कर लें कि हमें समझ तो आ जाए आपकी बात. मतलब द पार्लियामेंट की बात इसमें कोई आ ही नहीं रही ओथ में. मैं ओथ में मतलब पार्लियामेंट की अगर आप मेंबर्स की ओथ देखें, उनमें भी जो मैं आर्ग्यूमेंट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज इक्वली incumbent upon the Parliament to follow what the Constitution says. The Constitution has given them power of legislation. इसमें कोई दो राय हो सकती है. इसमें कोई दो राय हो सकती हैं. मतलब 142 में और read with entry 55, they have a certain limitation. हसन साहब देखिए, आपको हम पूरा आपकी कदर करते हैं और सुनेंगे. अगर आप दलाइल ही नहीं दे रहे हैं, आपने ओथ को टच किया, अब आप दूसरी बात चलेगा, या तो इस बात को छोड़ दीजिए. कोई मुझे अभी तक मैंने कलम इस्तेमाल नहीं किया, मैं लिखूं क्या आपका दलाइल समझूंगा तो लिखूंगा ना. Let me then proceed the way I have proceeded rather than, you know. आपने ओथ का जिक्र किया, मैंने कहा पढ़ दीजिए, उसमें एंड लॉ लिखा हुआ है, आप वजाहत नहीं कर रहे हैं उधर. मैं ये सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि इसमें the Honorable Supreme Court has to remain within the constitutional framework, the Parliament has to remain within the constitutional framework. अगर जब मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं जी, फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं. और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है. मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू. वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को. आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना. लेकर आए ना मॉलट, इसीलिए नहीं ये मार्शल लॉ नहीं, ये एक पार्लियामान ने कानून. फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन.
ये बताइए, आप बता ही नहीं रहे ओथ की बात, तो ये आपका आर्गुमेंट खत्म। बताइए नहीं मालूम खत्म नहीं मालूम, ओथ में मालूम एग्जैक्टली इस पे आ जाएं, पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है कि नहीं है? अगर अब इजाजत नहीं, दें तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है या नहीं है? मालूम नहीं है, नहीं, वो बता दीजिएगा कैसे नहीं। मालूम आप 142 देखें, 142 को देख लीजिए। वन 142 के अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज subject to the constitution, then it again says subject to the constitution. So this is restricted power. The Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Now if 142A is read with entry 55, it does not give them any power which controls the procedure, because that's a constitutional power under आर्टिकल 55 आइटम 55 में है ना, आप वो पढ़ लें, अब उसका तशरीह की बात है उसकी। मतलब इसको सी भी पढ़ लें हम, अगर 142 जो मर्जी पढ़ना चाहें, 142 के ऊपर आए हुए हैं तो सी में देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन दैट आल्सो, इसको भी मद्देनजर रखना जरूरी है। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, द प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट have the power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. So everything revolves around अच्छा, एक चीज आप ये बहस कर रहे हैं कि अगर वो लिखा ना हो, अंदराज ना हो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, तब पार्लियामान उसके मुतालिक कोई कानून नहीं बना सकता, हाँ या ना? मतलब दैट वुड बी सब्जेक्ट टू योर लॉर्डशिप्स इंटरप्रिटेशन। भाई आपकी क्या राय है? मेरी राय, हमें अपनी राय पता है, आप अपनी राय बताएं। वेरी ऑनेस्टली, द एंट्रीज आर जस्ट अ गाइडलाइन, it can be interpreted by your lordship. I am here to assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I have to. आपकी राय क्या है? असिस्ट कीजिए ना। My lord, मेरी राय ये है कि these words of 55, अगर आप इजाजत दें मैं पढ़ देता हूँ। Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. इस वर्डिंग में इवन whether अच्छा एक सेकेंड, इनकी जो बहस है अदर साइड की, इनने जो नोट्स फाइल किए उन्होंने ये फरमाया है कि हम आपके हकूक सुप्रीम कोर्ट के सलब नहीं कर रहे हैं या कम नहीं कर रहे हैं, हम इनको बढ़ा रहे हैं। पहले 3 लोग या 5 लोग या पूरी जो भी 5, 6, 7 की बेंच सुन सकती थी एक केस, अब हमने एक अपील का भी इख्तियार दे दिया है, तो ये पॉइंट आप उधर ले जा रहे हैं ना। तो इसमें हम तो अपने पास तो अपील नहीं सुनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। तो इसमें आप बस आपका कहना है कि जो एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया वो हतमी होना चाहिए, उस पर कोई अपील नहीं होना चाहिए, ये आपका मौक़िफ़ है? मेरा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर समझाइए। जो मेरा मौक़िफ़ ये है, जो भी आप राइट दें, जो भी आप लॉ बनाएं, इट हैज टू फॉलो व्हाट इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अपनी मर्जी से पार्लियामेंट जो है व्हाट एवर दे थिंक इज राइट, नहीं तो पार्लियामेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन यही तो वो उनकी नजर में अब आपने पिटीशन फाइल की ना, उनकी नजर में उन्होंने सही किया है और उन्होंने मजीद एक फोरम दे दिया है। ठीक है, 3 लोगों ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब आप अगर हिस्टोरिकली इस बात को, कोई बात ही नहीं कर रहा है हिस्टोरिकली अब बात को देखें तो बहुत तनकीद की है वकीलों ने बिलखुसूस, और जिसको कहते हैं ना सोशल समाज ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार 184(3) के तहत इख्तियारात, तो इसमें बहुत से लोगों के पर्सनल हकूक, एक तो होता है बुनियादी बड़ी बड़ी बातें कि ब्रिक किल्न वर्कर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो आप उन मामलों में भी चले गए हैं, इलेक्शन मैटर्स में चले गए हैं, रेट ऑफ वो क्या होना चाहिए, शक्कर की प्राइस की क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को ये आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस खत्म ही हो गया। तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहती, पहली बात आपने हदूद की तजावुज किया है, इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि हम कानून बनाएं और आपको याद दहानी करवाएं, मगर आप अगर याद दहानी नहीं करते हैं तो आप ही लोग, एक इस पे नजरसानी का बहुत हदूद कम होता है, एक आप इस पे अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था,
ठीक है, तो इससे एक आम शहरी के हकूक पे जो आप खड़े हुए ना शहरी की हैसियत में, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। आप सपोज आप किसी चीज में आते और आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीठ जोड़ने लगते कि एक हक, बुनियादी हकूक अपील का तो दुनिया के हर आइन और कानून में दिया गया है, आपने तो एक कानून का हक भी हमें नहीं दिया है। तो फिर आपको क्या सेहत पे असर पड़ रहा है? हमारे सेहत पे शायद असर पड़े कि हमारे एक दफा हमने कह दिया बस हर्फ आखिर है। मतलब आपने क्योंकि मना किया था कि इधर उधर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना, मैं नहीं गया, लेकिन आई विल आंसर टू योर लॉर्डशिप क्वेश्चन। देखिए हर चीज को देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। जी, I am answering this question. My lord, this is if I may be permitted, this is not the first time that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So the argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say आप मेरे सवाल का तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल यही उसका जवाब है कि जो आप क्राई की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कहा आपको राइट, मैं आपको बता रहा हूँ आपको नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा कि एक अपील आपको हक मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट इज अ मेजर नुकसान। आपको तकलीफ हो रही है सर? मतलब मुझे से हो रही है बिकॉज देन द सुप्रीम कोर्ट विल स्विंग आफ्टर एवरी ईयर, एवरी टाइम अ न्यू चीफ जस्टिस विल कम, देयर वुड बी नो सर्टेनिटी ऑफ द डिसीजंस, देयर वुड बी नो सर्टेनिटी ऑफ बेंचेस दैट विल अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द पाकिस्तान। एक सेकंड ठहरिए, ये एक सेकंड, ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है, फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट हैं सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग हैज टू बी कम विद इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू सिट डाउन and come and maybe amend their rules, amend the laws. लर्नड काउंसिल, ये बताइए, इंसाफ तक रसाई अगर पार्लियामेंट ने देनी हो हक, उस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले, आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ तक रसाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पार्लियामेंट को? मतलब इधर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुन लेना, एक राइट ऑफ अपील दी है, दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू जस्टिस एंड राइट टू अपील relating to a jurisdiction which already is vested in the Supreme Court. That remedy, would that not be covered? Lordship, there are two aspects. देखिए मैं आपको सर, मैं अगर इनको सर, राइट ऑफ अपील बाय अ स्टैट्यूट टू अ सुप्रीम कोर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, द राइट ऑफ अपील फ्रॉम एन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। बहुत से सारे लॉज हैं जिसके अंदर अपील प्रोवाइड की गई है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत से ऐसे लॉज हैं जिसमें डायरेक्टली अपील कंटेंट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में नहीं है और एक्सेस ऑफ जस्टिस। आप कहें कि उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 204 के साथ अपील होनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे Hassan Irfan, just to add to what my learned brother has said, the basic question is not whether an appeal can be provided or appeal cannot be provided. The basic question is which procedure, which entity would provide that appeal, where the Constitution needed to provide an appeal. It provided an appeal. Absolutely. 184 is original jurisdiction. Okay. उसकी अपील अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने 185 में प्रोवाइड नहीं की तो कॉन्स्टिट्यूशन का मंशा नहीं था वो अपील प्रोवाइड करना। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जिधर सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, उसमें अपील थ्रू ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन डिस्पेंसेशन नहीं हो सकती। अगर ये मंशा है कि 184(3) की अपील प्रोवाइड की जाए अब,
जो ओरिजिनल लॉ मेकर के जहन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, then the only way to interfere in or provide an addition to or provide an adjunct to 184(3) is by way of a constitutional interpretation or constitutional amendment. That is what addition to the constitution. इस तरह तो ये है कि लॉ मेकिंग में आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख दें, कॉन्स्टिट्यूशन जो नहीं भी प्रोवाइड करती, आप कहें जी मेरे पास लॉ की पावर है, मैं एक अपील नहीं मैं 4 अपीलें दे देता हूँ. That would be deviating from the constitutional mandate. Or Malot, 1 point or 184. Mr. Irfan, whether incompetence of the Parliament can be condoned on the ground that the intention of the lawmaker is good? Malot, can you repeat that the question? Whether the incompetence of the Parliament can be condoned on the ground that the intention of the Parliament is good? No, Malot. I think the intention has got nothing to do with following the constitution. So whatever may be in the law, whether it provides access to justice or provides extra remedy to the public at large, it cannot be treated as a good law unless the Parliament has the competence to do it. Legislative competence. That is absolutely, that is a very clear rule throughout the world in all We could look at entry 55 where the competence is derived from. Entry 55 says that so far as the Supreme Court is concerned, to such extent as expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction. Which means that it is something that is provided under the Constitution, and it is that jurisdiction which is being enlarged. Is that correct? That's correct. So, आप ये बताइए कि जो provisions दिए हैं power 2, 3, 4 में, 6 में, 7 में, ये Constitution में कहाँ दिया हुआ है जिसकी enlargement हो रही है? All that the law can do, the legislature can do is enlarge something that is provided by or under the Constitution. ये वाली power कहाँ दी है Constitution में जिसको वो enlarge कर? This is what my whole argument is, because the argument that I actually started to begin was that 1843 does not start with the word subject to Constitution or subject to law. It's not just 184. It's any provision of the Constitution. So if we uphold this law, then it means that we have to read into 184 saying subject to law, the Supreme Court has these powers, which is not possible, by any stretch of interpretation or stretch of imagination. That will tend amount to amending the Constitution or rewriting the Constitution, because the framers of the Constitution have not placed any fetter on the power of a petitioner to come and bring a petition. And there is also a second power under 1843, which is a power of the Supreme Court to make an order. अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, एक जजमेंट है जफर हादी शाह साहब का केस जी, वो पार्लियामेंट तो छोड़िए, उन्होंने तो एक फर्द वाहिद को सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दे दिया. आप उससे इत्तेफाक करते हैं? आप उससे इत्तेफाक करते हैं? मैं नहीं करता. मतलब और सपोज अगर सुन लीजिए पूरी बात, और आप उससे इत्तेफाक नहीं करते हैं तो ये बड़ा अच्छा कानून नहीं बना है पार्लियामेंट ने कि हम उसको रिविजिट कर सकें, अगर वो रिविजिट नहीं हुआ होता आज तक, या वो फर्द वाहिद हावी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पे. इस सवाल का जवाब दीजिए. If I may put it this way, certain decisions of this honorable court in the past does not lead to a situation where the same mistake should be repeated again. फिर आप हमारे पास क्या कर रहे हैं? नहीं सर, ठहर जाइए ना, ये मफरूजों में ना जाइए. हम देखिए, मैं जो बात करता हूँ मैं मफरूजों की कम करता हूँ, हकीकत की बात कर. पिछली तारीख पे हमने मौजूद थे, रिको डिक का केस का बताया, ठीक है. रिको डिक 3 मेंबर बेंच ने फैसला किया था, ठीक है. कोई दरवाजा नहीं था उसको खोलने का सिवाय एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एक स्ट्रेच जुरिस्डिक्शन आप समझ लें उसको, वहां इस्तेमाल किया गया. इस तरह का केस अब आप पाकिस्तान की तारीख से शुरू हो जाइए, मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें, डोसो से शुरू करें, किससे शुरू करें, नुसरत भुट्टो की बात करें, और ये जफर हादी शाह की बात करें. ये इन्होंने तो आप किधर हैं, आप तो इधर बारीकियों में जा रहे हैं. उन्होंने पूरे
शख्स को कह दिया तुम आइन से जो खिलवाड़ करना चाहो हम आपको दे देते हैं इख्तियार। ये इख्तियार आप बार बार आइन और कानून की बात कर रहे हैं, तो ये तो क्या जजों ने नहीं हल्फ तोड़ा अपना जब उन्होंने ऐसे फैसले किए? आप खुल की बात कीजिए ना। ये पाकिस्तान की तारीख को आपके नजरअंदाज कर दें, हमारे एक बहुत फलसफाई बहस में पड़ जाते हैं। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं करते, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें देखिए पार्लियामान की कदर करना चाहिए। अगर कोई कानून, ये मेरी जाती राय आप समझ लें, है तो आप उसको दिखाइए ये लोगों का इसमें नुकसान है, या आइन के शिक के बरक्स है। मेरे दोस्त ने बार बार फरमा रहे हैं आप प्रोसीजरल बात है तो कोई कर नहीं रहा है। आप लोग अगर आप मेरिट से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अटैक भी नहीं समझ आए कि आपको पूरा पसंद नहीं है, उसकी कोई शिकें नहीं पसंद हैं, कोई प्रोसीजरल मैटर्स हैं, कुछ मैटर्स हैं जैसे कि आप 14 दिन में फैसले कर लें, ठीक है। अब ये यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सदर, ठीक है, ये मौक़िफ़ पहले कहते थे कि जी फला डॉक्ट्रिन है, केस लगता ही नहीं है, ठीक है। खुल के बात कीजिए ना, या तो ऊपर पीछे हट जाएं। वो कहते थे ये डॉक्ट्रिन है, मैं साहब का नाम नहीं लूंगा, केस ही नहीं लगाओ। ये आइन के मुताबिक है, ये कानून के मुताबिक है, ये क्या हल्फ के मुताबिक है? जब आप ये सारी बातों को नजरअंदाज कर देंगे, फिर आप ये भी देखिए कि दुनिया में हमारा जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो करती हैं, सर्वे करती हैं, हमारा नंबर किधर है? हम नंबर नीचे ले जाना चाहते हैं कि नहीं, फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो। और फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। मार्शल लॉ डिक्टेटर्स हो जाए या कोई और हो जाए, वो फर्द वाहिद होते हैं, वो इज्तिमाई सोच वाले नहीं होते हैं। वो कहते हैं मैं खुद फैसला करूंगा, आपस में नहीं करूंगा। हम आपस में फैसले करने वाली बात है। आपको क्या फिक्र पड़ रही है कि हम कैसे फैसला करें आपस में? हम 1 करें या 3 करें? आप 5 की बेंच सुन ले एक आईनी मसले को। एक चीफ जस्टिस गुजरे, उन्होंने कहा पहले 5 सीनियर चीफ जस्टिस जजेस सुन लें आईनी मसाइल को, ठीक है। इनका एक तर्ज कार है, अगर वही पार्लियामान कर दे, ओहो गुनाह हो गया। आप कर सकते हैं तो अगर 5 कर सकते हैं, फिर वो 2 भी कर सकते हैं, फिर वो 3 भी कर सकते हैं, फिर वो कह सकते हैं कि मैं जिस मर्जी जज को बिठाऊं वो भी मैं कर सकता हूं। तो देखिए ये आप जो बात कर रहे हैं ना, सदर ने ये कह दिया, अखबार की खतीम पढ़ लें, ये तो हमारी तारीख है, इसको भी मद्देनजर रखिए। और फिर आप जरा दलाइल दे दें कि ये पार्लियामान को आपने एकदम उस पर अटैक कर दिया कि जी उसको आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि जी उन्होंने कोई गलत बदनीयती से। आपसे पहले चौधरी साहब ने कहा ये जी पर्सन स्पेसिफिक है, मुझे इसमें पर्सन किसी का नाम नहीं न जिक्र आ रहा है, ना किसी का तस्करा है। हो सकता है आप ही कल इसका फायदा उठा के हमारे सामने आ जाएं किसी केस में। तो आप जरा इतना नैरो विजन ना रखिए, जरा पूरा ब्रॉडन विजन कर लेना। और हमें जो आइन और कानून की जो बातें करते हैं, तो हमारे सामने एक सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए, लोगों के फायदे की बात है या लोगों के नुकसान की। चीफ जस्टिस के फायदे को आप छोड़ दीजिए। Well, this is not about the Chief Justice. I have got no lost love for any Chief Justice. Let me put it this way. I'll draw your attention to entry 58. So, as I've understood your argument, that the Parliament is bereft of jurisdiction if it wants to legislate in the context of Article 10A या इंसाफ तक रसाई, यानी वो आम शहरी के लिए बिल्कुल ये मान नहीं कर सकती। As I have correctly understood your point? Lordship, let me first address, I will come to your Lordship's question. Lordship, I have not used a single word that there was any, or nor I have imparted any insinuation on any one parliament or anything else. Your Lordship's point that what has happened in the past, in fact, our past is unfolded for us for a better future. So your Lordships are sitting as 15-member bench. Your Lordships can undo whatever the cases have been passed. What your Lordship is perhaps Excuse me, sorry, we cannot. The appeal gives us the right to do it. आप कह रहे हैं we can, अभी तो आप contradiction कर रहे हैं। No, आपने तो पिछले जजमेंट्स की बात है। मैं जो आपको सबमिट कर रहा हूँ, एक मैं सिर्फ जी सर। The first time that this court upheld martial law was Doso versus State. Asma Jilani, Doso versus State was set aside on as being not good law, as having made Pakistan a perfectly good country into a laughing stock. Now the question is, when the court did that in Asma Jilani, was the court hearing an appeal against Doso versus State? Lordship, I didn't get your question. Maybe if you put your speaker on. The speaker is on. My
My question to you is that the first time that this court upheld martial law was Doso versus State. In Asma Janani, that judgment was declared not to be correct law. When deciding Asma Jalani case, was this court hearing an appeal against Doso? No. No. The court, if it wants to correct its past errors, it can do so. It doesn't need to have this kind of appeal in order to be able to do so. The court should have the stature, if it wants to, if it thinks an error has been made, it can correct that error. There are many ways, because we are a common law jurisdiction. We are driven by common law, by precedent. Doso versus State, Grand Norm, Kelson's theory, that was all precedent. Asma Jalani, totally different case, said wrong, that was wrong law. In the future, the court can do that. But I think if I may, if you permit, I would like to ask you a question on 184.3, because you read it out to us. Now you read out the word, the court shall if it considers. My question to you is, this consideration, is that judicial power or is that administrative power? No, that's a judicial power. That's what the argument is. Therefore, it seems to me, because you see, it's very interesting that one of our learned colleagues in a number of, well, not number, but in more than one chamber appeals, he has made an order that the question of maintainability of a petition under Article 184.3 is adjudication. It is exercise of judicial power, and therefore the registrar can't do it. As I read section 3, it seems to me that that is what section 3 is conferring a power on the committee. Now, I read the decision of my learned and distinguished colleague to be a statement of principle. And if this principle is correct, surely it seems to me, but you can correct me if you think that I'm wrong. If this principle is correct, then issue of maintainability, whether decided by the registrar of this court or whether decided under cover of this act by a panel of judges, no matter how senior and eminent those judges, it is still exercise of administrative power. It is not adjudication, which maintainability requires because of the word considers. So would it be therefore correct to suggest that the use of this word considers, which necessarily means exercise of judicial power by the court, section 3 is in direct conflict with this requirement of Article 184.3, and therefore perhaps on that very short ground is perhaps unconstitutional. Absolutely. And Your Worship, there are scores of judgments. As I said, I'm not going by the judgment that the constitutionality has to be decided by the court itself. That's the function of the court. If I may take this a little bit Learned further, Counsel. I'm sorry. No, answer the question. Please. Learned Counsel, on the same argument, the power that earlier vested in the Chief Justice to consider and pick and choose whatever petitions he wanted to place before the court, that was also unconstitutional? Your Lordship, if I am too small a fry to raise this argument, but I think I have to raise this argument that Your Lordships are proceeding on a premise that this bench or the committee of 3 judges would be able not to pick and choose. And it is, if past experiences are any learning curve for us, it will not be difficult for us to imagine even a committee where the 3 judges are on the same page, as they call it, and then still just decide to fix the benches, then that would be going on a mafruza, if Your Lordship would say. आप मफरूजों की बात कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तीनों मिल करके आपके खिलाफ फैसला कर रहे हैं जी इरफान साहब के केस नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए। आप कह सकते हैं 5 की कमेटी बनाए, वो भी बना सके, कर सकता है, पूरा फुल कोर्ट करें, वो भी कर सकता है, मगर ये जो कानून है इसकी सिमत सही है या नहीं, आप मद्देनजर रखिए जो हो चुका है पाकिस्तान में। अगर आप कहें नहीं, मैं तो एक मफरूजे पे बात करूंगा, पाकिस्तान की तारीख को नजरअंदाज करना चाहता हूं,
तो वो एक अलग बात है। तो इस तरह तो अगर आप कहें तो मगर वो अंग्रेजी में कहावत है सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है, हो सकता है हमें बड़ा इख्तिलाफ हो जाए, ठीक है, हो सकता है हम आपने जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया सेम पेज पे हों, मगर ये बेहतर है या वो बेहतर है। तो मफरूजों पे ना चलिए, आप सिर्फ बताइए। एजाज साहब बार बार आपसे दो बुनियादी सवाल उनके वहीं के वहीं रह गए, कोई इस तरफ जा रहा है कोई इस तरफ जा रहा है, उन सवालों पे अगर आप फोकस करें तो जरा आपके लिए आसानी होगी। आप उन्हें लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मेरा बार वही जवाब है, it has to follow the law, constitution. Mr. Hassan, I'm right here. Sir. Just following that, Justice Ijaz had already quite, succinctly pointed out the question, and we're going all over the place. Let's just get done with the competence. To me, competence revolves around Article 191, Entry 55 and 58. So, direct question to you is there a parliamentary competence under 191 itself? Because competence can come through two ways. One is through the Constitution itself, or the other is through the entries in the Constitution. So, the direct question is, under Article 191, can the Parliament legislate regarding practice and procedure? We'll come to the appeal later and see whether at all it's part of practice and procedure or it's a substantive separate provision. Usko chhod dein. Abhi sawal पूछ रहे हैं कि क्या 191 directly or read with 58 gives Parliament the power to legislate regarding practice and procedure? No, What's your answer to that? My short, clear and crisp answer is no. No, please tell us how. How? Because if your Lordship would read 142 read with 191, so because there is a direct power to the Supreme Court to make rules. So power to the Parliament to make law under 191. Relating to what? To the practice and procedure. It doesn't say so. Where is that? It is so practice and procedure is not enlargement of the power. 191 को एक दफा पढ़ लें. जी my lord. Let's read 191. फिर बताएं कि क्या वो पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है. (191) Procedure. Subject to this Constitution and the law, the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. So the question is that it says that the practice and procedure could be regulated by the Constitution itself, by the law given by the Parliament, or by the rules made by the Supreme Court. There are three different sources which could regulate the procedure. And nothing is redundant in the Constitution, so there could be a parliamentary act passed by the Parliament which could regulate the practice and procedure, and any rules would be subject to the Constitution as well as to that law. So the law 191 itself is authorizing the Parliament to go ahead and come up with legislation on practice and procedure, and if not, to read it 58, then again Parliament gets the competence to legislate regarding practice and procedure. That's a separate question. What is practice and procedure? It's a separate question whether at all that legislation then does not pass the constitutional muster as far as fundamental rights are concerned. We'll come to that later. आपसे सिर्फ सवाल ये है कि 191 read with 58 कैसे नहीं पावर देता पार्लियामेंट को कि practice and procedure पे कानून साजी करें? सर मैं इसका जवाब आपको देता हूँ. Again, there is a distinction between Mr. Hassan, यहीं पे इसको supplement कर लीजिए question को, whether the word law used in Article 191 can be construed in the sense conferring a power on the Parliament to legislate on the practice and procedure of the Supreme Court, or it should be construed in a sense limiting the power of the Supreme Court to frame rules. Sir, ये अपने एक judgment में the Supreme Court has interpreted what does subject to the Constitution and the law mean. In the context of 191, the power, आप इसको पढ़ें, the Supreme Court may make rules. The power lies with the Supreme Court. और जो subject to law and Constitution लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कोई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के कोई रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्टिंग लॉ में ना हो तो उसके
मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स बनाएगा. If there is a restriction in the constitution or if there is a restriction in an existing law, उसके contrary सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बनाएगा. लेकिन रूल्स कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा. और इसको रिस्ट्रिक्शन existing law or existing law they're defined है 267. सर इसमें अगर existing law में अगर restriction नहीं है, constitution में restriction नहीं है, then the exclusive power to make administrative rules or internal rules or rules of procedure, exclusive power is with the Supreme Court. Sir, it does not confer jurisdictional or it does not confer competence on the Parliament to 191 does not confer power on the Parliament to legislate on practice and procedure. I'm grateful for raising this question. In fact, I have made a list. चले बढ़िए आगे. Malot, if I may submit. नहीं submit करें, घड़ी को भी देखिए. अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बिट्स एंड पीसेस में इंटरप्रेट करना है, देन वी मे नॉट बी एबल टू रीच एनी कंक्लूजन. इफ वी हैव टू रीड एज अ होल, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ये जजमेंट आपने वो देखी है जिसमें ये इंटरप्रेट हुआ. जी मैंने ये आपको रिप्रोड्यूस की है. अच्छा, पहली बात एक चीज मुझे बता दें, आप क्या अग्री करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कर सकती है? सर मैं एग्री करता हूं इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट जो करे वो कर सकती है. अच्छा रुक जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन रुक जाइए, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मैं नहीं एग्री करता हूं. ठीक है. और हमारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. जिस किस्म के प्रेसिडेंट्स विलायत में बनते हैं, कॉमन लॉ जिसको हम कहते हैं, हमारे उसमें आइन में इंदराज गया है. जैसे लफ्ज आ गया ना, डिफेंड, प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब ये अदालत, और मैं खुद एतराफ करता हूं, और जब तक आप एतराफ नहीं करें सलाह हो ही नहीं सकती है. वो आया, कोई शख्स आया, जी ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आइन को आप रोंद लें, आप आइन को बदल लें. तो ये अगर हम इस पे चलें तो फिर इसका मतलब है हर बेंच जब उस वक्त में फैसला करेगी वही लागू होगा. आइन का तो कोई अहमियत रही नहीं. फिर तो जजमेंट लॉ पे हम चलेंगे. आइन को एक तरफ रख दें, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला सही है और 4 जजेस जो सिंध हाई कोर्ट का उनका गलत है. फिर मूड हुआ कि जी 200 केस में वैलिडेशन और मार्शल लॉ तो सही है. फिर जिलानी नहीं आज सही नहीं है, नहीं फिर सही हो गया और फिर नहीं सही हो गया. मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुनियादी सवाल तो ये उठता है, आप क्यों नहीं आप हिम्मत पकड़ते हो कहें सुप्रीम कोर्ट गलत थी, क्योंकि आइन के बरक्स या कहिए, हिम्मत कीजिए और कहिए नहीं बिल्कुल, या आप कहिए हम जंगल के बादशाह अंडा दें या बच्चा दें. क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप आखिरी बात कर रहे हैं. ना आप पहली किश्ती चाहते हैं, ना दूसरी किश्ती में जाना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि मैं ये आखिरी बात कर दूं जो मुझे जेब नहीं देती, क्योंकि मैंने ऐसा हल्फ उठाया नहीं है. सर आपने हल्फ उठाया है प्रिजर्व का इंग्लिश का कॉमन मतलब क्या है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप वर्ड्स पे जाते हैं और आप स्टारे डिसाइसिस में नहीं जाते तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक लफ्ज इधर उधर नहीं कर सकते. प्रिजर्व मीन्स यू हैव टू प्रिजर्व इट, डिफेंड इट, यू हैव टू डिफेंड अटैक. और कितना वक्त आप ले रहे हैं अभी आप बताएं. सर अब मैं क्वेश्चन मेरे मेन Learned Counsel coming back. Sir, अगर आप माइंड वो बहुत सारे उनके क्वेश्चंस थे. Learned Counsel coming back to my Lord Justice Ijazul Hassan's question. ये जो interpretation है 191 की, how do we read into this provision that subject to law means a restriction in law and that the primacy is to be given to the rules made by the Supreme Court? ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना. सर जो 191 की पावर्स हैं, दे आर डायरेक्टली कमिंग, जो मंसूर शाह साहब ने भी क्वेश्चन किया था, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है. द क्वेश्चन ऑल्सो अराइज, कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल मेकिंग पावर कैन बी स्टल्टिफाइड बाय अ सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन? Because whatever has to be done, it has to be done through an internal mechanism. ये तो आप दोहरा रहे हैं अपनी बात को, नई दलाइल दीजिए ना. मैं अगली बात पे, सर एक मैं सिर्फ बात कर लूं तो जवाब जो
था वो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन इसी कंटिन्यूएशन में सवाल देखें ना, आप ये 191 की बात कर रहे हैं, वो तो जो उसकी ओपनिंग वर्ड्स है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो मैं समझा इसमें तो शायद ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकती है अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के, लेकिन दैट मस्ट बी सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। उन इख्तियार के तहत, उस लॉ के तहत जो भी रूल्स बनेंगे, हम उस रूल से, उस लॉ से हट के बाहर नहीं जा सकते। क्या इसका ये मतलब नहीं? यही क्वेश्चंस तो आप लोगों ने रिजॉल्व करने हैं। इफ द मेजॉरिटी विल, तो फिर करने, तो फिर आप बैठ जाइए, हम कर लेंगे, फिर आपकी जरूरत नहीं है, आप तशरीफ रखिए। फिर आप मेरी बात तो सुने। द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 191 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। 191 में सिर्फ नहीं, मगर आप बात ही नहीं समझे। अगर आप उसकी ओपनिंग वर्ड देख लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, माई लॉ, जरा सुन लीजिए ना। जैसे जमाल साहब ये कह रहे हैं, तो ये एंड लॉ लिखने की जरूरत क्या पेश आई? सिर्फ लिखते सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। ये लॉ जो दो लफ्ज हैं, इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है। सर, इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे, अगर कोई लॉ मौजूद, हम आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आइन, सर, जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे, उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता तो उसके आप फॉलो करते, विच आपका कहना ये कि जब आइन बन रहा था उनको नहीं था। सर, द क्वेश्चन इज दिस, जिस वक्त आइन बन रहा था, आप ये बताएं कि सब्जेक्ट टू का क्या मतलब है? इज दैट एन इनेबलिंग पावर? डज इट गिव कॉम्पिटेंस? और इज दैट अ लिमिटेशन? डज दैट रिस्ट्रिक्ट द पावर? Because the understanding, one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being derived from. Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to, is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law. So all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the particular... साहब, आप जवाब देते नहीं हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। सर, मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर दूं ताकि आपको सब्जेक्ट का मीनिंग बता देना जी। हाउ शुड वी रीड? आपसे सवाल एक हुआ ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रूल्स उसको फॉलो करें। यही पूछ रहे हैं या नहीं? जवाब भी देते कोई भी नहीं है। हसन साहब, ये रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिस्ट्रिक्शन का कोई इशू ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। अब ये लॉ आ गया, इसमें भी अगर हम कुछ चाहें तो हम रूल बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई चीजें आई हैं। मिसाल के तौर पे उसको रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने की जरूरत है। सुन लीजिए, कोई भी सेक्शन ऐसा है, उसके लिए भी हम रूल बनाना चाहें तो विद इन दी प्रेमिस ऑफ दैट लॉ, सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज दी रूल्स, बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बात समझ आई आपकी? सर, अब क्वेश्चन एक अराइज है, तो ये रिस्ट्रिक्शन और इंलार्जमेंट का इशू नहीं है ये। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली। सब्जेक्ट टू बहुत जगह इस्तेमाल होता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन एब्स्टेंटिंग क्लॉज। तो ये जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब? सॉरी, आपके सुप्रीम कोर्ट कहाँ से बना है? जी, नहीं, दैट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो भी लॉ होगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, लॉ में मौजूद हो, हम उसके मुताबिक रूल बना सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इस लॉ के बाद भी हम रूल अपने अमेंड कर सकते हैं। सर, क्वेश्चन ये है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, आप बना सकते हैं, बट क्या राइट ऑफ अपील है, उसके लिए हम अपने रूल में कर सकते हैं कि इस अपील को हम किस तरह हैंडल करेंगे।
राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप्स टू डिसाइड। व्हाट माय सबमिशन इज phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what there is a restriction in the constitution. Absolutely. You cannot go beyond that. It's not beyond that. Subject to law means It's correct. unless restricted by law. But kaun sa law which exists for the reason कि subsequent legislation के लिए relating to the Supreme Court there has to be a specific authorization in terms of 55 item 55 जो specific authorization नहीं है सारी precise question, your lordship. नहीं मिस्टर हसन, आप हर चीज पे प्रिसाइज क्वेश्चन वो कह रहे हैं, अपना तो आपका जवाब ही नहीं। जवाब तो whoever says whatever to you, you agree with that. अच्छा नहीं, आप देखें, सवाल आपसे ये है जो I'm just adding to what Justice Ijaz just said. 191 की बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का सवाल है हमारे सामने। एक ये सवाल इस तरह भी पढ़ा जा सकता है 191 को, and that's what we want you to assist us with. You see, whether at all 191 envisages that there can be a law made by the Parliament that regulates practice and procedure, and once that law is there, then the Supreme Court rules will be subject to that law. So the fact that it is mentioned there that there could be a law relating to practice and procedure makes it an enabling provision. Is that a correct interpretation or not is a question I'm asking you. Subject to law, constitution and law, is that an enabling provision because the constitution is saying that there could be a law relating to practice and procedure, meaning by that there is a substantive power given to the Parliament to make law relating to practice and procedure. Is that a correct interpretation? And could we, if we have any problems, could we just tag along entry 58 with it to then make this complete? ये पहला सवाल आपसे पूछेगा, जवाब प्लीज दे दें कि आप ये पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है कि आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लॉ के लिए लॉ बना सकते हैं, वरना उस लॉ का क्या मतलब है आर्टिकल 191 में रिडंडेंट हो गया वो लॉ का। मैं जवाब दे दूं अगर आप इसका जवाब दीजिए, कब से मुंतजर हैं सर। अगर आप 191 को आइसोलेशन में पढ़ेंगे तो आपकी बात ठीक है कि लॉ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप 191 को 142 और एंट्री 55 से पढ़ेंगे उससे क्या फर्क पड़ेंगे, तो उसमें पावर नहीं है, तो उसमें पावर नहीं है। ओके चलिए, ठीक है, आपका जवाब आ गया। अब जरा घड़ी देखिए और टाइम आपका कितना हो गया जरा। आई एम ग्रेटफुल फॉर। मैंने तो अभी आर्ग्यू ही नहीं किया, क्वेश्चन ही आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह होता है, डोंट वरी। आर्टिकल 1 में जो ये पावर, ये जो सब्जेक्ट टू लॉ है, कैन पार्लियामेंट मेक ए लॉ इन एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 191 repealing the Supreme Court rules 19. So that is what. Let's take it one step. यही तो सवाल है आपसे कि क्यों नहीं। अब अगर आप हर दफा ये सर उसमें इबहाम है ना, ये तो आपने इंटरप्रेट करना है। छोड़ दीजिए, नहीं है, कर लेंगे हम इंटरप्रेट। आपका क्या फायदा? शुक्रिया। मैंने तो आपको मेरा मेन पॉइंट। चलिए फिर दूसरे हम उनसे पूछें। I have some questions for you. So stick around at this rostrum. Now you say that the law that Parliament can make under 191 cannot repeal the Supreme rules made, which are currently the Supreme Court rules 1980. Absolutely. Can there be an implied repeal? They cannot be, sir. Now, order, for example, to take one example, order 11 of our rules says benches shall be constituted by the Chief Justice. Now, section 2 of this law constitutes a committee of 3 to do the same job. It follows from this that there is an implied repeal of order 11. But your case is that since there can be no repeal, there can't be any implied repeal. So on that basis, potentially we have now a conflict between what section, assuming the legislative competence, section 2 and what the Supreme Court rules are saying. Now, how is that to be addressed?
How is that to be addressed? If your submission is correct, there can be no repeal, therefore there can be no implied repeal, yet there is Section 2 of the Act. In Section 8, they have provided an overriding clause, which effectively is an implied repeal. But you say that can't happen. So if Parliament makes a law like this, there is a conflict, and here is the conflict. I'm giving you one example of it. How will that be resolved? So that will be very difficult to resolve, because I would humbly submit that my answer to your question would be that the Parliament has got no power to do that. Because Parliament, sir, your function cannot be controlled by the Parliament. That's against the... Now, if I may, in light of this very interesting debate that has, or discussion that is going on, so what does subject to law mean? If I may draw your attention to the 1956 Constitution. In that Constitution, the third schedule provided the rule-making power of the Supreme Court. ठीक है? और आप उसका Article 177 पढ़ेंगे. है आपके पास किताब? जी 56 का Constitution ओरिजिनल jurisdiction का रूल मेकिंग का नहीं, 1956 Constitution के थर्ड शेड्यूल में रूल मेकिंग पावर थी सुप्रीम कोर्ट की. 56 कॉन्स्टिट्यूशन दें जी. अगर मैं इन द मीन टाइम मैं आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है? उसके that had to be read with Article 177. Now this is very interesting, and my question to you is whether language as used in Article 177 and the language used in Article 191, is there any difference? 177 of the 56 Constitution said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, the provisions of the third schedule shall apply. Right. So it seems to me that here was a direct enabling ground. Third schedule said rule making power with the Supreme Court and the High Courts, but 177 said until other provision in that behalf, other provisions in that behalf are made by Act of Parliament. Here the language is not like that at all. And if we regard law as used in 191 to be an enabling power, then that sets up this conflict between, because the law cannot repeal the Supreme Court rules, there can't be an implied repeal. So maybe one possible way of avoiding this conflict is to read law as meaning that it is only it can only apply a break, or let's say it's not an enabling power. Because the framers of the Constitution did have Article 177, they could have followed this language. They could have said, until other provisions in that behalf are made by Act of Parliament, Supreme Court may make its rules. They didn't do that. If you are right, and as you say, it is for us to ultimately decide, if the law cannot repeal the Supreme Court rules, if the law cannot impliedly repeal the Supreme Court rules, then where does the conflict go? And maybe if to regard it as not an enabling power allows for the conflict to disappear. Because the rules have the constitutional power. That is also a question, that whether the Parliament can undo a thing which has been done exercising the constitutional power. The Parliament cannot. That is the answer. You see, in Baz Mohammed Kakad, this court has very specifically held that because these rules have framed in exercise of constitutional powers, they cannot be displaced, amended, modified, overruled by ordinary legislation, because these rules stand at a higher pedestal. This is what I have actually reproduced Baz Mohammed Kakad's citations on that basis. Yes. Mr. Hassan, I believe it will be last अब आप कितना टाइम लेंगे आप बता दीजिए. मैं पॉइंट्स को सिर्फ आपको कर लीजिए खत्म. हाँ. सर अमीनुद्दीन साहब is whether we were able to frame rules in 1980 in derogation of the existing law at that time. My lord, my honest answer would be no.
if the law would have existed. Because this is an exercise which has been done. So perhaps one way to look at it would be that if you were to look at your rules in future, but then you would have to see whether the law provides for anything which is within the constitutional framework or not. That's a very important question which we are missing out. Because here, in fact, one of the other aspects that this committee is doing, it is preventing an access to the Supreme Court directly and preventing the Supreme Court from making an order. This is the question. If the Parliament legislates, which is as per your contention in contradiction with that rules, it is the basis for striking down of the legislature's legislation. Yes, if it is in conflict with the clear provisions, very simple provisions of the Constitution, it is a reason to strike it down. If I may follow up on that, you see, the 1980 rules replaced the rules of 1956, the Supreme Court rules 1956. The Supreme Court rules of 1956 were existing law within the meaning of Article 268 when the present Constitution came into force on the 14th of August 1973. That is when the power of, or the jurisdiction, whatever you want to call it, if such jurisdiction exists, of Parliament to make a law came into being under Article 191. So there was no vacuum, there was no break. As soon as that power came into existence, there were already the Supreme Court rules in the field, the ones of 1956. So therefore there was a continuity perhaps. All that happened was that in 1980 those rules were changed. So if I may ask you my question in a slightly different form, could say in 1974, 75, 1992, sorry, not 1990, say in 1973 or 1974, 1975, could Parliament have made a law under 191 repealing the Supreme Court rules of 1956? No. No, absolutely not. So the same, so the enabling aspect of it, the fundamental point that I like your brevity. Ji? I said I like your brevity. Leonard Council. You will say yes, no, which we really appreciate. Leonard Council. Are we concluded? Because I want to hear you say something more, if you want to say something more. Leonard Council. The Lordship would allow me, I have submitted, I am still answering the question, my Lord. Leonard Council. What can I do? I like your brevity. Leonard Council, this is a question for you and for all the councils. Can you cite any example from any jurisdiction around the globe that give precedence to rules made by an unelected court over a primary legislation made by a competent forum? Your Lordship, I would respectfully submit, in fact I wanted to make, Your Lordship may rethink and rephrase this. Answer the question again, you're doing this. I would respectfully say, this is not answer the question. This is not an unelected court, because भाई आप जवाब दे देना, कहीं दुनिया में होता है. which is created by the दुनिया में पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से बाला कोई रूल्स हो सकते हैं तो वो साइट कर दीजिएगा एग्जांपल. जी मैं आपको करके उसका जवाब मैं दे दूंगा, बट जो क्वेश्चन है रूल्स जो है दे हैव टू बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. चलें फिर आप दे दीजिएगा, जवाब दे दें. माय नेक्स्ट पॉइंट. हसन साहब इसी क्वेश्चन में इसको बढ़ाते हुए, क्या आपके कहने मतलब जो मैं समझाऊं, आप कहते हैं कि ये रूल्स वंस फ्रेम्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और अगर ऐसी कोई बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप बताएं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में डील कर रहे हैं, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बार लगाया कि पार्लियामेंट हैज नो अथॉरिटी टू मेक लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट? ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है तो देन नॉट, बता दें क्या ऐसा. Let's put it another way. If there is no bar, there is no permission also, and this is what we are arguing since morning, that there is no permission for the parliament to make the law. हम वापस उस पे आ जाते हैं. If there is no specific bar, there is no permission at all. Your Lordship, there is a way to look at the constitution. हम वापस 199 में आते हैं. Opening words हैं, the rules must be subject to and the constitution and the law. But who will make rules? ताबे हैं कानून के, और कानून 142 में बताया गया पार्लियामेंट का काम है to make law.
मैंने शुरू में एक ये आर्गुमेंट देखिए आप जरा आप बात की देखें, वही बात बुनियादी बात वहीं ठहरती है। उधर ही है सर, आप तो सुन रहे तो लेना। वो जो एजाज साहब का सवाल था, देखिए अगर ये कानून में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि गैर आईनी हैं तो उनको तो स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, मगर एजाज साहब का सवाल अपनी जगह है। वो आप सवाल वो तो आपने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि वो बना सकते हैं या रूल्स या नहीं, वो आप हाँ या ना जवाब दे देते हैं हमें, और चलिए फिर अगर यही जवाब है तो हम सुन लेंगे। सर मैंने जवाब तो दिया था उसका, आपने तो आप कह देते हैं ना हाँ बस। सर मैंने तो लॉ से तो किया हुआ है, हम आपको आर्टिकुलेट कर रहे हैं बेहतर चीजें। मैंने तो जवाब दिया हुआ है जनाब को, अगर फिर अगर नहीं है तो ना करें ना, किसी और को मौका दे दें ना। मैंने तो सर जवाब दिया हुआ है कि वो नहीं छोड़िए ना, फिर आप रोस्टर में अगर आपको कोई वही बातें अगर हमसे एग्री या डिसएग्री करेंगे। और बता देता हूँ सर, जल्दी कर लें प्लीज। सर दिस लॉ affects brevity is the soul of wit. Absolutely. Thank you for agreeing. For a change, I believe. Sir, the Constitution has created a balance. Please, अब ये बात कितनी दफा कर चुके हैं, trichotomy of powers की। Sir, नहीं, मैं it's a different point है। After 18th Constitutional Amendment, the Chief Justice, जो पुराना concept था, Chief Justice is first among the equals, has gone away because the Constitution has now given a provision in the Constitution where the Honorable Chief Justice has a supremacy or a primacy, at least to the extent of the administrative functions, because the Constitution has provided a provision that the senior most judge would be entitled to become the Chief Justice. And there are other functions in the Constitution which are ascribed or prescribed for the Honorable Chief Justice. You are just waffling. You are not articulating any contention. This is what I am saying. It is obvious. It's written there. What's so profound here? उसके Constitution के consequences है ना. Mr. Hassan, we will not permit this. हर चीज का एक सर मीनिंग है ना. आप उसको देखें तो वो बात आ जाएगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को आप इस तरीके से थ्रू अ सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन नहीं कर सकते है ना, कोई मजीद बात कर लें ना, मजीद कोई पॉइंट कर लें, वही आप बात 6 दफा करेंगे। सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस जो मैंने केस लॉ इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो एक इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, मैंने केस लॉ आपको दे दिया है। एंड माय लास्ट पॉइंट जो अपील के अंदर मैंने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया था कि अपील 185 के अंदर देखिए उस पर आपने बिल्कुल बात नहीं की, और मंसूर साहब ने ये बात की थी। इस कानून में 2 चीजें हैं, नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील। वो ये 2 चीजें अलग अलग हैं। इसका नाम शायद हो सकता था जरा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटैंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है। उधर उस पे आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं? जी सर, उसमें फिर 185 पढ़ लीजिए। हम नहीं पढ़ेंगे, अपनी राय दीजिए ना। अपनी राय नहीं हसन साहब, उसमें उसके लिए अगर आप एंट्री 58 एक सेकंड पढ़ेंगे। जी सर, एंट्री 58 सर, उसमें एक सवाल है आपसे, अगर आप जवाब दें। एंट्री 58 जरा पढ़िएगा तो फिर सवाल। Matters which under the constitution are within the legislative competence of Majlis Shura or relate to the federation. जी नहीं 55 sorry. 55 जी 55 है jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplemental powers. आप इसको कैसे पढ़ते हैं, क्या मानी है इसके? Enlargement है या ये सब वो है, retraction है? और खास तौर पे जो to the extent by the constitution and under the constitution, इनके क्या माने हैं? जी मैं आपको बताता हूँ, इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं। आप देख, सवाल तो ये है ना, ये देखिए हसन, सवाल ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से हो सकती है जिस तरह ये की गई है, और उसके जो यहाँ पे रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में हुई है, वो रिपोर्ट आई है अभी तक? वो रिपोर्ट ही नहीं आई अभी तक। सर दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। मेरा इसमें मैंने तो आर्ग्यू किया है, वो आप कहें मैंने नहीं आर्ग्यू किया। एंट्री 55 के जरा मानी बता दें, हाउ यू अंडरस्टैंड एंट्री 55?
this relates to jurisdiction and powers of all the courts except the Supreme Court with respect to any matters in this list and to such extent as it expressly authorized. So it has to be expressly authorized by or under the Constitution. इसका मतलब है कि Constitution उसको authorize specially करेगा तो वो चीज आएगी. तो by हो गया ना, under the Constitution का क्या मतलब? Sir, which is by or under means के are you interchangeable words and under doesn't add anything? Is that what you're saying? No, sir. They can take this question with a level of seriousness. Don't just sort of flip-flop the question like that. It's a very important case. You give it the, you just agreeing, disagreeing. My Lord has asked a very specific question, and under what does it add? Say nothing, say something, what does it add? Sir, by or under the Constitution means that anything which is either provided by the Constitution or under the Constitution, which would your Lordship would deduce through an interpretation. Are they interchangeable terms? Included in that. By the Constitution means that it has to be included in the Constitution. Whether it is expressly provided in the Constitution or by implication provided by the Constitution, but there is a question here. No. You see, enlargement. The word, आप जवाब तो देना पहले सवाल. सर देखिए आपसे पूछा है ना by और under क्या under by the parliament है, by the act of the parliament है, under the constitution. Under the constitution से क्या मानी, कोई reference दे ना. Under the constitution which is provided and in the constitution would include everything and anything which is in there. Mr. Hassan, would be a power to make legislation. Hassan, you're not adding anything useful. सर मैं बस conclude. फिर आप इसको conclude ही करें. सिर्फ बता दें. Enlargement of jurisdiction. One, enlargement, the word enlargement in itself implies that something already exists and Absolutely. It is being enlarged. Now, providing a fresh appeal is conferring a jurisdiction or enlarging a jurisdiction? It's conferring the jurisdiction. It's not enlargement. It is not. Why? Because it does not exist previously. So anything which maybe enlargement would be which is already existing and your lordships are given additional powers to do that, or can you cite an example? Cite an example. Learned Council, ये appeal जो है, ये appeal किस jurisdiction और power की remedy है? Sorry? किस power और jurisdiction की remedy है? The appeal 143 की है. That power already exists. Sir, and it's only a continuation of the same power. Sir, 185 के अंदर 184 की appeal does not exist with utmost respect. Council जो my lord ने सवाल पूछा वो सवाल के ऊपर again देखिए question ये है कि if your lordships are to read into the constitution then that's a different question. The question is 184 is before 185. ठीक है? सारी जो अपील्स सुप्रीम कोर्ट के में प्रोवाइडेड हैं वो हर उसकी तमाम सूरतें 185 में मेंशन की गई. If the framers of the constitution wished to provide an appeal under 184, they could have easily added something in 185 saying 185 के अंडर 184 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील हो सकती है. आर्टिकल आइटम 55 में enlargement का यूज वर्ड इस्तेमाल करके ये कहना कि जी हम एक नई jurisdiction क्रिएट या कन्फर कर सकते हैं, is that doable? और उसी में मैं ऐड कर दूं कि कंपटीशन कमीशन एक्ट में अगर अपील है और काफी कवानीन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील आ गई तो फिर वो तो एक्सप्रेसली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई जुरिसडिक्शन. सर वो कैसे फिर अपील आ गई? We are trying to mix the two things. That is by virtue of another entry in the constitution, the legislation relating to that has got nothing to do with 184 power. जी मैं वही आपसे पूछा. एंट्री 55 में स्पेसिफिकली enlargement of jurisdiction डील करती है, तो we will not go to any general entry. We'll go to the specific entry first, which says that enlargement jurisdiction can be either expressly given in the constitution
और अंडर तो का मतलब ही नहीं अभी तक आपसे आया, लेकिन चलें बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली, तो फिर कंपटीशन कमीशन की अपील कैसे आ गई? सर उसमें जो अपील जी सर 185 को जब आप पढ़ेंगे 185 के अंदर अपील कंपटीशन कमीशन के लिए हसन साहब यू नॉट रियली आंसरिंग एनीथिंग, नो यू आर नॉट आंसरिंग, सॉरी टू से, तो आप किसी और को दे देना, अब काफी हो गया ना, अब देखें 1 बजे, अब आप कितना आपने आधा घंटा 20 मिनट आधा घंटा कहा था, मैंने आपको 2 घंटे दे दिए हैं। सर साहब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, आप एग्जाम्पल की बात हो रही है, देखिए मैं लास्ट डेट पे भी मैंने क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं आया। आपके लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो 199 है, उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई है। उस अपील को बाद में 269 आर्टिकल 269 में उस जो आपके ऑर्डिनेंस था, मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस के तहत एक अपील की रेमेडी दी गई है वो दुरुस्त दी गई है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, वो कि वो हाईकोर्ट से मुताल्लिक है, नो डाउट, लेकिन हाईकोर्ट को भी 202 कंट्रोल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को 191 कर रहे हैं, दोनों से। अगर 199 में अपील की रेमेडी आज तक चली आ रही है, क्यों ना 184(3) में आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए? वहां होनी चाहिए बेशक हाई कोर्ट से। फिर वो सिविल प्रोसीजर कोड की अमेंडमेंट के थ्रू अपील है, दैट इज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, हियर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स अ डिफरेंट कॉनोटेशन, वो तो हम उसको दो चीजों को इंटरलिंक नहीं कर सकते। और आइटम 55 में हाई कोर्ट के मुतालिक लेजिस्लेशन का दगन नहीं है, कोई भी नहीं है। Yes, Mr. Bandari, I think you want to now take the rostrum. I have a question. I have a question. ये जो आपसे enlargement of jurisdiction पूछा था, I go back to the question कि जो constitution of benches है, वो कौन सी jurisdiction है under the constitution जिसको enlarge किया जा रहा है? कोई भी नहीं है, वो तो आपने constitution of benches में बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन नहीं है। That's not an enlargement of jurisdiction, or is it a jurisdiction? That is all. In fact, that is a jurisdiction. That's not an enlargement of jurisdiction. Constitution of benches are by way of the rule-making part that the court has decided that benches is formed. So that's not an exercise of jurisdiction. England के अंदर they have actually formed a special law for that. ये ऐसी ज़बानी बात ना करें, लॉ का हवाला दिए। सर इंग्लैंड में ऐसे लॉ हो गया, ऐसे नहीं करें ना, दें चीजें हमें फिर। मिस्टर हसन, इस लॉ में 2 चीजें हो रही है ना, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, एक अपील की जुरिस्डिक्शन की बात है, तो 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, इसको सेपरेट रखें। बिल्कुल सेपरेट करें। ख्याल में बंदारी साहब शायद बेहतर जवाब दें, शायद या सुनते हैं इनको। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू। You are a petitioner? My lord, I am representing PTI. Your lord. Are you a petitioner?